start a new chapter, that is our last chapter, equilibrium. Yeah. So the previous chapter that we studied was thermodynamics. So in thermodynamics, we talked about process, different types of process, and how are different types of process occurring, and what are the different parameters that we have to see when we talk about initial state and final state. We talked about all of those things. Equilibrium is actually the final state. Okay? Equilibrium is a state where nothing is happening. You know? And even that is very interesting to chemists when nothing happens. जब कुछ होता तब तो सबके लिए इंटरेस्टिंग है ही, लेकिन जब इक्विलिब्रियम की बात होती है ना, इक्विलिब्रियम and when nothing happens, and actually there is no time in which nothing is happening. Something is happening, but we cannot observe it. There is no observable, there is no measurable change happening, and that is equilibrium. Apparently there will be nothing happening, but even if we look inside, there's something happening there, but there is no significant change in any of the parameters, any of the we talked about the system, and there are things which can define a system. So there is no changes in the parameter, that is equilibrium. So when you will be talking about equilibrium, there is something that you should remember, that equilibrium, just give me a second. I need to share this. You will write equilibrium is a state when there is no apparent change in the macroscopic properties of the system. ठीक है? There is no apparent change in the macroscopic properties of the system, यानी कि आपको change कुछ नहीं दिखेगा. ठीक है? So we are going to study a chapter where nothing happens. Basically speaking, जहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, उसके बारे में उसकी डिटेल्स हम लोग लेने वाले. And equilibrium, we will study two types of equilibrium. One is known as the physical equilibrium and the other is known as chemical equilibrium. But obviously we will be dealing more with the chemical equilibrium aspect and not the physical equilibrium. Physical equilibrium बहुत थोड़ा सा पढ़ना है हमें. We have physical equilibrium. ठीक है? Physical equilibrium, for example, you have liquid. It always is evaporating. है ना? हमेशा लिक्विड क्या होता रहेगा? इवेपोरेट होता रहता है. But if you have a bottle full of water, that water should also evaporate, and it is evaporating, but you don't see the water level going down, even if the water bottle is open. So that is equilibrium has been established, but we are very sure that if there is water molecule at 25 degrees Celsius, some evaporation will be taking place. And similarly, the vapor molecules will be striking the surface of water and they will be condensing also. So liquid is transforming to vapor and vapor is transforming to liquid. But the rate at which both of these things are happening is same. If 5 molecules of liquid is vaporizing, then 5 molecules of vapor is also condensing to liquid. Okay? So this particular aspect of equilibrium, I would say, जहाँ पे there is no change in the amount of liquid, there is no change in the amount of vapor. That is liquid vapor equilibrium. A similar equilibrium can exist when you are going from solid
to liquid. The amount of solid is not changing and liquid is also not changing, but both are interconverting towards each other. So there is no apparent change. There is a process happening, but there is no apparent change in the macroscopic properties. Third is solute, that is solid. It is getting dissolved in solvent and becoming solute aqueous. पानी में dissolve होते वक्त, ठीक है? So we'll look into details of liquid vapor equilibrium as there is a question in NCERT. We will discuss that question और उसी से आपको थोड़ा अंदाजा लगेगा that what we are talking about in terms of equilibrium. Assalamu alaikum Noha. Noha, am I audible? No, is Noha not here? अच्छा, Noha left. So, she has done this chapter already. अच्छा, यहाँ पे एक और केमिकल इक्विलिब्रियम लिख लीजिए जो कि हम लोग बाद में डील करने वाले हैं. A liquid is in equilibrium with its vapor in a sealed container at a fixed temperature. ठीक है भाई. That means we have a container and here we have liquid and here we have vapor. And both of these things are in equilibrium. क्या मतलब है इसका that they are in equilibrium? That means rate of evaporation, obviously water will be evaporating na, rate of evaporation will be equal to rate of condensation. Vapors will be also converting to water molecules. ठीक है, so rate of evaporation, the amount of vapor converting, the amount of vapor converting to water, that is condensation, it is equal to the amount of liquid that is converting to vapors also. ठीक है. अच्छा, उससे होगा ये, see whatever be the amount of vapors, it is constant and these vapor will apply a pressure that is known as what, vapor pressure. And that vapor pressure, समझ लीजिएगा इसको थोड़ा सा. Vapor pressure क्या होता है? When liquid evaporates, it forms vapors. Vapor is gas, and gas, it exerts pressure on the containers of the wall. That pressure, which is given by vapors, it is known as vapor pressure. So when the rate of evaporation, rate of condensation is same, that means the amount of vapors that is present, it is also constant. The amount of vapor is not changing, and that is why vapor pressure is also constant, is constant. ठीक है. Is this clear till here? Yes or no? Please tell me. Amna, Khadija, and Rishita, what is happening? Yes, sir. What about others? Amna and Khadija. Does this make sense till here? See, you have to keep answering me because it is a very conceptual chapter. है ना, आसान है लेकिन इसमें concepts जो है ना काफी नहीं इंट्रोड्यूस हो रहे हैं. You have not learned these concepts in the 11th standard. ठीक है, जैसे thermodynamics था, अभी भी नए concepts है, उसी तरह से ये भी है. ठीक है. Amna and Khadija, everything clear till here? What happened, guys? ठीक है. If you are not replying, इसमें हम आपको जबरदस्ती क्या ही करें. Now vapor pressure is constant. Then they are saying something, we are doing something ना, कोई process कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? The volume of container is suddenly increased. Volume of container is suddenly increased. अब इससे होना क्या है? Since we have read this question, इसको थोड़ा सा हम छोटा कर सकते हैं. अब इससे होना ये है आपके पास कि आपके कंटेनर का जो वॉल्यूम है, आपके कंटेनर का जो वॉल्यूम है उसको क्या कर दिया जा रहा है, बढ़ा दिया जा रहा है. ठीक है. So if the container's volume is increased, then I think I should have taken something different. I should have taken
दीज आर वेपर्स। अब क्या हुआ, कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ चुका है, ठीक है। नाउ द वेपर मॉलिक्यूल्स, they have a larger area to roam around. Can you see that? Yes or no? Please tell me. Make sense? Yes, sir. Now, previously what was happening? There was a certain fixed area which was available for the vapor molecules to roam around. Right now, what is happening? Right now, the vapor molecules, they have a larger area to move around. That is why rather than striking on the surface of water, they will roam around in the volume like this. So what would happen as the as the volume is increased? जैसी वॉल्यूम बढ़ेगा, rate of condensation will go down, will decrease, because vapor molecules, they were striking the water surface क्योंकि उनके पास उतना volume available नहीं था. Now since it is having a larger volume to roam around, these vapor molecules will roam around this whole area. जो पूरा भी वॉल्यूम इनके पास मिला हुआ, जो पूरा स्पेस मिला वहां पे वो रोम करेंगे. एंड व्हेन द रेट ऑफ कंडेंसेशन डिक्रीजेस, so what would happen? Rate of evaporation is now greater than rate of consumption. The rate of evaporation is greater than rate of condensation. Now, what would happen when rate of evaporation is greater than rate of condensation? Then what is going to happen? The vapor molecules, amount of vapor molecule will increase. Make sense? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. ठीक है. अच्छा, एक और चीज, दिस इज तो एज द वॉल्यूम इज इंक्रीज, तो स्लोली ये चीज होगा. Then suddenly the rate of condensation will not drop. Slowly you will realize, okay, the rate of condensation is dropping. But there will be a very immediate change that will happen as the volume is increased, because we know that PV is equal to nRT. According to this equation, if we look at the relationship between the pressure and volume, then pressure and volume are inversely proportional, है ना, क्योंकि वॉल्यूम को इधर भेजिएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा. So when the volume is increased, the pressure is obviously going to decrease. And since now the gaseous molecule, they have a larger volume, then what is going to happen? As the volume is increased, instantly vapor pressure will drop. Vapor pressure will decrease. ठीक है, vapor pressure is going to decrease. And vapor pressure decreases, rate of condensation decreases, rate of evaporation is greater than rate of condensation, amount of vapors will increase. And this increase in the amount of vapors will lead to vapor pressure increases again. Does this make sense? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. ठीक है. अब यहाँ पे हम लोग आंसर करते हैं सवालों. What is the initial effect on the change on vapor pressure? Initial effect क्या है? Vapor pressure decreases. How does rates of evaporation and condensation change initially? Initially, the rate of condensation decreases and the rate of evaporation, मतलब ये आपके पास जाएगा, rate of evaporation is greater than rate of condensation हो जाता है. ठीक है. And amount of vapors will increase. What happens when equilibrium is restored finally? And at the end, एक कुछ टाइम तो ऐसा होगा ना कि उसके बाद there will be again no apparent change happening after the volume increase. उस टाइम पे the vapor pressure will be having the same value as it was having before. What happens to equilibrium? What happens when equilibrium is restored finally? And what will be the final vapor pressure? Final vapor pressure will be same as initial. Initial जब हमारे पास वॉल्यूम को चेंज करने से पहले, वॉल्यूम को इंक्रीज करने से पहले जो वेपर प्रेशर था, वही सेम वेपर प्रेशर वापस से आ जाएगा. So the graph of vapor pressure will look something like this. Vapor pressure was constant. There is an increase in volume, so vapor pressure dropped suddenly. Slowly, the rate of condensation dropped and the rate of evaporation increased. So the vapor pressure also started increasing. And it would reach the initial vapor pressure. वापस से फिर क्या हो जाएगा? ये constant हो जाएगा. ठीक है? Like this. So this is the vapor pressure and this is, you can say, time. ठीक है. एंड यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे वेपर प्रेशर, सॉरी, वॉल्यूम अचानक से बढ़ा दिया गया. सो वेपर प्रेशर डिक्रीज्ड. चलिए, प्लीज राइट दिस डाउन.
Please raise your hand once you're done writing. Raise your hand once you're done writing. Done, everyone? Now, we are going to move towards the chemical equilibrium. And before starting chemical equilibrium, we have to understand a concept known as reversible reaction. So what is reversible reaction? Please write with me. The reaction in which products that are formed can also react with each other to form reactants under suitable condition. Okay, under suitable condition. Now, the very first idea about reversible reaction, it was due to a historic figure known as Napoleon. So when Napoleon and his whole team, and when I say team, तो उस team में scientists भी रहते थे, because if you remember Akbar had Navratna, right? And these ministers were of different fields, experts of different field. So each and every emperor, even though like right now our governments they have Niti Ayog, right? So that Niti Ayog it is the think tank of India. Okay, so each and every emperor they have their own think tanks. So when Napoleon was visiting Natron Lakes, you can Google Natron Lakes. It is quite a view. It has red water. Okay, it's completely red water. So what he saw in Natron Lakes, the chemist, who was chemist, or you can say the scientist who was there with Napoleon, what he saw that there are there is sodium chloride in the bank of Natron Lake, and there is also calcium carbonate. There is also calcium carbonate. Okay, so these two things are there. And he has seen in the laboratory that when NaCl and calcium carbonate is present, then it should form Na2CO3 and CaCl2. Okay. He saw this reaction in the lab, but what he was seeing in the Natron Lake is that NaCl and CaCO3, these are present and these are not reacting. If NaCl is present with CaCO3, it should react, but it is not reacting.
So he said that, okay, fine, that means there is an opposite reaction that is happening here, Na2CO3. It is reaction with calcium chloride, and it is giving NaCl plus CaCO3. Okay. So this reaction was happening in the lake, and this reaction he saw in the lab. So now, since he saw that, okay, fine, in the lab, NaCl and CaCO3 are acting as reactant and giving sodium carbonate and calcium chloride. But in the lake, what is happening? The opposite reaction is happening. And this was the starting point of reversible reactions. That means under certain conditions, sodium chloride will react with CaCO3, and under certain other conditions, sodium carbonate will react with calcium chloride. So this was the starting of reversible reaction. Now I understand that this may be a bit strange to you guys because you have learned about chemical changes are irreversible. You remember this line from 10th standard? Physical Yes. changes, chemical changes, है ना? But it is not, you can see, it is not completely true. है ना? Chemical changes are irreversible in a manner you cannot change them while the change is happening. You cannot change the direction while the change is happening. एक बार जब reactant से product बन सकता है, then you can do something to the product in order to get the reactant. Not all the reaction, for sure, not all the reaction, but many of the reactions. They can be reversible in the sense that when you get the final product, then you can apply some conditions, and under certain conditions, you can change them to reactant again. While the process is happening, you cannot change it. बस ये आपको process रोकना पड़ेगा. ठीक है? So that is the meaning when we say irreversible. Okay, so basically what is happening? We have reactant A, it is giving product B. तो जो आपके पास A से B जा रहा है, इसको हम लोग फॉरवर्ड रिएक्शन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? We say that this is forward, and B से A जब बनता है तो इसको हम लोग बोलते हैं बैकवर्ड रिएक्शन. ठीक है, इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर राइटिंग द रिएक्शन. अगर आप बी को रिएक्टेंट बना दे तो बी से ए वाला फॉरवर्ड हो जाएगा. बेसिकली मतलब ऐसा नहीं है कि रिएक्टेंट फिर तो रिएक्टेंट कुछ बचा ही नहीं ना. इफ यू थिंक अबाउट इट, then nothing is reactant. If the product can also be a reactant, then how are we defining reactant? So what is reactant? Reactant is those chemical species which are written in the left hand side of a reaction. एरो जो होता है रिएक्शन का, इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो भी लिख दिया आपने वही रिएक्टेंट है. ठीक है, दैट इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ रिएक्टेंट. अब यहाँ पे आपके पास फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन है. ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन लेफ्ट टू राइट, बैकवर्ड रिएक्शन राइट टू लेफ्ट, दैट्स इट. ठीक है, उसमें कोई भी पंगा नहीं है, डायरेक्शन के ऊपर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. नाउ we'll try to understand what happens at equilibrium. What happens at equilibrium? So let us say that we are starting with certain moles of A and there is no mole of B. तो क्या होगा आपके पास? A will get converted to B. A will be getting converted to B, and there will be a point. ऐसा नहीं कि सारा का सारा A will be getting converted to B. There will be A which is getting converted to B, and as B is forming, B is also getting converted to A. But the rates are going to be, the rates are what? They are different. ठीक है, rates initially क्या है? Different है. इसलिए हम ऐसे मान के चलते हैं आपको. Let us suppose ठीक है, ये मान के चलते हैं we started with 2 moles of A. ठीक है, एंड 0 मोल ऑफ बी कुछ नहीं है यहाँ पे. सो ए जो है बहुत जल्दी क्या करेगा? बी में कन्वर्ट होता जाएगा. सो द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, इट विल बी इनिशियली लेट अस सपोज 0.2 मोल पर सेकेंड. ठीक है, एंड एज ए इज गेटिंग कन्वर्टेड टू बी, ध्यान रखिएगा, एज ए इज गेटिंग कन्वर्टेड टू बी द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डिक्रीजिंग, and when the concentration of A will decrease, then the rate of that reaction will not be as fast. जितने ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होंगे उतना ज्यादा एक दूसरे के से कोलाइड करेंगे, एंड उतनी जल्दी रिएक्शन होगा, उतना फास्ट रिएक्शन होगा. If the amount of reactant molecule will decrease, the rate of reaction will also decrease. So what will happen? 0.2 mole per second, 0.19 mole per second, 0.18 mole per second, इस तरह से ये डिक्रीज होता चला जाएगा. And the rate of, as soon as B is formed, B क्या करेगा? It will
form A once again. तो backward reaction होगी. And rate of backward reaction की अगर हम बात करें, so when very small amount of A will be present, we will be having, let's suppose 0.01 mole per second. This is the rate of the backward reaction. है ना? B is getting converted to A in 0.01 mole per second. But as the concentration of B is increasing, this rate is also increasing. 0.02, 0.03, and so on. यहां तक समझ में आ रहा है आप लोग को? ये सुनो प्लीज चलनी. हाँ जी बताएं. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है. आप you can see that the rate of forward reaction is decreasing, rate of backward reaction is increasing, and there will be a point जहां पे rate of forward reaction will be equal to rate of backward reaction. Make sense? ऐसा हो सकता है? ऐसा ऐसा होगा ही ना. There will be a point जहां पे rate of forward reaction घट घट के वहां पहुंच जाए जहां rate of backward reaction बढ़ बढ़ के पहुंचा है. Make sense? ऐसा Yes, sir. है ना. तो at that time what is going to happen? Let's suppose this rate of forward reaction, rate of backward reaction आपका कहां पे मिला है? 0.10 mole per second. है ना. Rate of forward reaction is also 0.1 और rate of backward reaction भी 0.1 हो चुका है. Now what is going to happen in each second? हर एक सेकंड में क्या हो रहा है? 0.1 mole, 0.1 mole of A is getting converted to B, and in the same second 0.1 mole of B is getting converted to A. तो A की कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है बाई 0.1 मोल, बट B कन्वर्ट हो जा रहा है A से, तो वापस से उतना ही बढ़ जा रहा है. A is converting from 0. It is converting to B and increasing the concentration of B by 0.1 mole. In the same second, B is also getting converted to A, and that is where the concentration is again decreasing. So at the point when the rate of forward reaction, rate of backward reaction will become equal, at that point we will say that equilibrium has been established. Make sense? Yes or no? Please tell me. So for a few seconds, there's equilibrium, and then it changes again. No, it won't change ना. मतलब देखिए, the rate was dependent on concentration. क्योंकि concentration decrease कर रही है for मतलब A की, तभी rate क्या हो रहा है? घटते जा रहा है. और B की concentration increase कर रही है, that is why rate is increasing. Make sense? है Yes, ना? sir. But when the rate of forward and backward reaction it will become equal, तो concentration ही change नहीं होगा. And if the concentration will not change, then the rate of forward reaction, rate of backward reaction will also not change. Make sense? Yes, sir. है ना. तो जैसे मान लीजिए कुछ कुछ रिएक्शन होने के बाद आपका ए जो हुआ, आई एम नॉट सेइंग कंसंट्रेशन इज इक्वल ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, बट रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन वही रह जाता है एंड जो प्रोडक्ट का है वो वही रह जाता है. फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज ए का कंसंट्रेशन घट के हो गया 0. लेट सपोज नॉट 0. इसको लेते थोड़ा ज्यादा 2 मोल. ठीक है. एंड बी कंसंट्रेशन बढ़ के हो गया आपका 10 मोल. ठीक है. वी स्टार्टेड विद सर्टेन अमाउंट ऑफ ए, लेट्स लीव दैट. बट दिस इज द पॉइंट 2 मोल और 10 मोल जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन सेम हो चुका है. अब क्या होगा? एक सेकंड की बात करते हैं. इन 1 सेकंड 2 से 2 माइनस 0.1 मोल होगा बिकॉज ए इज कन्वर्टिंग टू बी. मेक सेंस? सोनो प्लीज टेल मी. Yes, sir. अब 10 क्या हो रहा है? 10 प्लस 0.1 हो जाएगा बिकॉज ए कन्वर्ट हुआ है ना, तो बी बना है. एंड इफ अगर बी बना है तो 0.1 मोल ऑफ बी बनेगा. मेक सेंस? Yes, sir. In the same second what is happening, B का 0.1 mole is getting converted to A. तो माइनस 0.1 B से और प्लस 0.1 A से. तो ये देखिए आप, जितना घटा था उतना बढ़ गया, जितना बढ़ा था उतना घट गया. Now the concentration itself is not changing. If the concentration will not change, then the rates will also not change. Yes, sir. ठीक है. So what we can say, a few things इक्विलिब्रियम के बारे में. At equilibrium, we can say that rate of forward reaction will be equal to rate of backward reaction. Second point, what happens? The concentration of reactants and products become
rather becomes constant. Makes sense till here? Yes or no, please tell me. Yes, sir. Please write this down. Let me know if there is any doubt, and raise your hand once you're done. Raise your hand once you're done. Waiting for Amna and Khadija. Everyone is done. Serious question. Choose the correct option. It can be options also. Option number A is rate at equilibrium. The rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction. Option B is the concentration of reactant. It is equal to the concentration of product. And option number C is the rate of concentration of reactant and the concentration of product becomes constant. Which of the options are correct? A, B, or C? Send the answer on the chat. I will give you like 30 seconds. You got only one answer. 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10,
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Okay. I've got two answers. Both of them are correct, but incomplete. So two things are correct. A is also correct. C is also correct. And B is not correct. Okay. Concentration of reactant and product are not equal, but they are not constant. है ना? जो reactant concentration वो वही रह जाता है, product concentration वही रह जाता है. Same से कोई लेना देना नहीं. Then you will write. Again, question is choose the correct option. No, this is graph. समझ आ जाएगा, ठीक है ना? घबराना नहीं है बस आप लोग को. घबराइएगा तो फिर कुछ नहीं आएगा. ठीक है. सो यहाँ पे आपके पास रेट है, ठीक. एंड हियर यू कैन से दिस इज टाइम. फाइन. और ये जो ग्राफ है आपका जो कम होता जा रहा है, तो ऑब्वियसली द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी डिक्रीजिंग एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन विल बी इंक्रीजिंग. ठीक है. और ग्राफ कह रहा है कि एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, इस टाइम पे क्या हो चुका है, इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड. ठीक. दिस इज वन ऑफ द ग्राफ. दूसरा ग्राफ है आपके पास. The other graph is something like this. Oops. So, and it is saying that at this point, इस point पे क्या हो चुका है, equilibrium अचीव हो चुका है. ठीक है. And this is also rate. This graph is also plotting rate, and this is the rate of forward reaction, and this is the rate of backward reaction. And अगला जो ग्राफ है आपका, that is regarding concentration. And the y-axis you have just time. ठीक है. यहाँ पे आपके पास concentration है. Here you have time, and here the graphs are something like this. They're saying that at this particular point, the equilibrium has been achieved.
There is another graph which is also of concentration. अभी आपको अगर उतना कुछ समझ नहीं आ रहा है इससे हो क्या रहा है, सर ने एक सर्कल से ऐसे आर्क बना लिया और उससे बिल्कुल अपनी क्रिएटिविटी बस दिखाए जा रहे हैं, पता नहीं क्या चल रहा है। तो बस अभी आप अगर बना सकते हैं तो ग्राफ बनाते रहिए साथ में मेरे, और धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी चीजें क्या हो रहा है क्या नहीं चल रहा है, ठीक है। अच्छा भाई, तो एक कंसंट्रेशन में एक और चीज हम बता देते हैं। कंसंट्रेशन जो है आपका, ये जो है आपके पास, दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विच इज डिक्रीजिंग, एंड दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विच इज इंक्रीजिंग, ठीक है। चलिए, अब जो अगला ग्राफ है, दिस इज ऑल्सो रिगार्डिंग कंसंट्रेशन, और यहाँ पे आपके पास दो ग्राफ्स कुछ इस तरह से हैं। एंड देन हियर दे आर सेइंग, यहाँ पे कुछ कह रहे हैं वो कि इक्विलिब्रियम आ चुका है, ठीक है। एंड हियर आल्सो दिस ग्राफ जो ऊपर से नीचे आ रहा है, दिस इज फॉर द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, और ये जो है दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, दिस इज कंसंट्रेशन, और यहाँ पे आपके पास टाइम है। और अगला ग्राफ भी सेम है बिल्कुल, बस यहाँ पे इक्विलिब्रियम वो बोल रहे हैं कहीं और स्टैब्लिश हो रहा है, दे आर सीइंग दैट इक्विलिब्रियम यहाँ पे स्टैब्लिश हो रहा है एट दिस पॉइंट वेयर दीज टू प्लॉट्स आर मीटिंग, ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं। अब उसके बाद एक और ग्राफ है आपके पास विच इज लाइक दिस। बस यहाँ पे फर्क ये है दैट दिस इज नॉट रिगार्डिंग रेट्स बट रादर दिस इज रिगार्डिंग द कंसंट्रेशंस, ठीक है। ये आपके पास कंसंट्रेशन की ग्राफ है। ये आपका है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। चलिए, तो यू हैव हियर 6 ग्राफ्स, ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ। हमारे पास इक्विलिब्रियम के लिए सिर्फ देयर इज ओनली टू कंडीशंस दैट वी हैव टू सी। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन शुड बी इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। दूसरा कंडीशन हमारे पास है दैट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज कांस्टेंट, जो चेंज ना हो, ठीक है। सो वी विल लुक एट द इक्विलिब्रियम पोजीशंस एट ईच पॉइंट, जहां जहां पे उन लोगों ने बोला इक्विलिब्रियम, या तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए या तो दूसरा, कोई एक भी हो जाए तो हमारे लिए काफी है, ठीक है। सो इन द ए ग्राफ, the point at which they are seeing that equilibrium has been established, this point here, is any one of these first or second condition being validated? क्या कोई एक कंडीशन भी मीट हो रहा है? टेल मी गाइस, yes or no in the chat, in the chat बताएं। क्या कोई कंडीशन मीट हो रहा है? विच कंडीशन रचिता? नो, ऐसे नहीं, ग्राफ के अकॉर्डिंग बताया ना। ग्राफ में तो सिर्फ रेट के बारे में बोला जा रहा है ना, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की तो बात ही नहीं है, है ना। फर्स्ट कंडीशन इज मीटिंग ओनली अकॉर्डिंग टू द ग्राफ। ऑल्दो जब अगर पहला कंडीशन मीट हो जाएगा तो सेकंड कंडीशन ऑब्वियस है मीट होना, बट अकॉर्डिंग टू द ग्राफ फर्स्ट कंडीशन इज मीटिंग। मेक सेंस ऋषिता, ये सुनो? Yes, sir. ठीक है। व्हाट अबाउट दैट मींस दिस ग्राफ इज करेक्ट, है ना, ये सही है ग्राफ। व्हाट अबाउट द बी ग्राफ? इज एनी ऑफ द कंडीशन मीटिंग?
क्या बी ग्राफ में कोई कंडीशन मीट हो रहा है? विच वन, आमना? विच कंडीशन, आमना? कौन सा मीट हो रहा है, फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट। कैन यू प्लीज टर्न योर माइक ऑन? खदीजा, आप क्लास में ही नहीं है क्या यार? खदीजा, आप जवाब क्यों नहीं देते? आप क्लास में पूरे बैठे रहते हैं, पता नहीं जवाब क्यों नहीं देते हैं। आमना, कैन यू प्लीज टर्न योर माइक ऑन? Yes, sir. कैसे मीट हो रहा है भाई? रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन सेम नहीं है ना? देखिए, अगर यहाँ लेट सपोज कुछ वैल्यू होगी रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की, जो कि दिस विल बी करस्पॉन्डिंग टू दिस वैल्यू, है ना? और रेट Yes. ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की इस पॉइंट पे जो वैल्यू होगी, इट विल करस्पॉन्ड टू समथिंग हियर. So these two Yes. values cannot be equal, na? Make sense, Amna? Yes, sir. That is why this B graph is wrong. सही है? समझ में आ गई? Yes, sir. अगला वाला बताएं. नेक्स्ट, क्या कोई कंडीशन मीट हो रहा है? हाँ, करेक्ट. सेकंड वन है ना? देखिए, रेट, जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, इट इज नॉट चेंजिंग, कांस्टेंट हो गया यहाँ. प्रोडक्ट की भी कंसंट्रेशन इज कांस्टेंट. ठीक है? दैट इज व्हाई दिस ग्राफ इज आल्सो करेक्ट. व्हाट अबाउट द डी ग्राफ? Yes, correct. Reactant and product are, concentration of reactant and product is constant. That is why this is also true. अगला बताएं. They're saying that at this particular point equilibrium has been achieved. क्या ख्याल है? हाँ. This is not correct because यहाँ पे reactant और product की concentration same है, constant नहीं हुई है. It is still changing. Product की concentration बढ़ रही है, reactant concentration घट रही है. ठीक है? So जब तक change हो रहा है तब तक equilibrium नहीं मिला है आपको. ठीक है? So this is not right. This is wrong. What about the F graph? Yes, that is correct. ये भी सही है ना? बिकॉज रिएक्टेंट प्रोडक्ट कंसंट्रेशन सेम हो चुकी है. चलिए, समझ आया सब कुछ? यस और नो, प्लीज टेल मी. क्लियर? इज एवरीथिंग क्लियर? यस. Yes, आमना, sir. खदीजा, है ना? ठीक है. मूविंग ऑन. नाउ व्हेन द concentration of reactant and product they become constant ना,
तो it really does not matter what is the concentration of reactant product, वो जो ratio होगा ना, that will always be constant. ठीक है? So for that we have to understand a concept that is known as equilibrium constant. Please write the topic equilibrium constant. So for a reaction AA plus BB gives you CC plus DD. ठीक है? Now in this case, the equilibrium constant is defined as the concentration of product to its coefficient. Just small a, small b, small c, no, these are coefficients, multiplied by the concentration of the product that we are having raised to its stoichiometric coefficient d, divided by concentration of a to the power a and concentration of b to the power b, where concentration of this is a, b, c and d are what are the equilibrium concentration. Not any concentration, these are the concentration at equilibrium, है ना, equilibrium concentration बोलते हैं. And A, B, C and D, the lower case, are stoichiometric coefficients. ठीक है? Stoichiometric coefficient. When all the species are in gaseous state, right? If all species are in gaseous state, then we can write Kp. Kp और Kc क्या है? Kc is the equilibrium constant in terms of concentration. Kp is equilibrium constant in terms of pressure. तो Kp किस तरह से डिफाइन किया जाता है? Kp डिफाइन किया जाता है कुछ इस तरह से. That is the pressure of C to the power C, pressure of B to the power D, and pressure of A to the power A, and pressure of B to the power B. Where Pa, Pb, Pc and Pd, all of these things are what? These are the pressure of ABC. है ना? At equilibrium once again, at equilibrium. Now, due to the relationship between pressure and concentration, there is a relationship between the equilibrium constant Kp and equilibrium constant Kc also. So once you have written this down, you will write relationship between Kp and Kc. Okay, raise your hand once you're done. Waiting for Amna and Rishita. Raise your hand if you're done.
Okay, everyone is done. ठीक है, ध्यान दीजिए. So Kp is pressure of, my bad, pressure of C to the power C, pressure of D to the power D, divided by pressure of A to the power A and pressure of B to the power B. ठीक है. और we know that PV is equal to nRT, and we also know that P is equal to nRT upon V. Number of moles divided by volume. It is, if volume is in liter, we can call it concentration. So P is equal to concentration RT. ठीक है. That is why अगर हम PA की बात करें, then PA will be equal to the concentration of A into R into T. Does this make sense? Yes or no? Please tell me, guys. Yes, sir. ठीक है. So I can write PC को क्या लिख सकते हैं? Concentration of C RT to the power C. For pressure of D, I can write concentration of D RT to the power D divided by the concentration of A RT to the power A and concentration of B RT to the power B. अब यहाँ पे हम थोड़ा सा अलग कर लेते हैं बाकी सबको. Concentration of C to the power C, concentration of D to the power D, concentration of A to the power A and concentration of B to the power B को हमने अलग कर दिया. Multiplied by, see the RT base सारा same है, तो I will write RT to the power, न्यूमरेटर में है तो C और D ऐड हो जाएगा. C plus D I can write. RT to the power C plus D माइनस, डिनोमिनेटर में A और B है तो A और B के लिए A plus B डिनोमिनेटर में हमने ऐड कर दिया और फिर उसको ऊपर लेगा तो माइनस हो गया. यहाँ तक बात समझ में आ रही है? प्लीज मी गाइस. Yes, sir. Yes, sir. Similarly, I can write this whole thing is what? This is Kc, है ना? Equilibrium constant in terms of concentration multiplied by RT. C और D क्या है? These are the number of moles of gas in the product. The number of moles of gas in the product minus A plus B is the number of moles, the sum of moles of gas in the reactant. Number of moles in reactant. So I can write Kp is equal to Kc RT delta Ng. Does this make sense? Yes or no, please? Delta Yes, Ng sir. समझ गया ना? The change in the number of moles of gas, product minus reactant. छापिए. Done, everyone? Raise your hand once you're done. ठीक है, ध्यान से देखिए. अब डेल्टा Ng क्या है? It is the number of moles of gas in product minus the number of moles of gas in reactant. ठीक है. और
डेल्टा एन जी के तीन वैल्यूज हो सकते हैं। आइदर डेल्टा एन जी कैन बी ग्रेटर देन जीरो, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट्स में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ज्यादा होगा रिएक्टेंट से, तब। अगला केस है when the delta Ng will be equal to zero when the number of moles of gas in the reactant side and the product side both are same। ठीक है, उस केस में क्या होगा, नंबर ऑफ the difference in number of moles of gas will be same, sorry difference will be zero, है ना, जब number of moles of gas सेम हो जाएंगे तो। और तीसरा केस जब आपके पास क्या होगा, इट विल बी नेगेटिव, यानी कि प्रोडक्ट विल बी हैविंग लेस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस देन रिएक्टेंट। डेल्टा Ng can also be what, it can be less than zero। तो in the first case प्रोडक्ट हैज, इसको थोड़ा और जगह दे दो भाई, प्रोडक्ट हैज मोर मोल्स ऑफ गैस देन रिएक्टेंट। अच्छा, जब डेल्टा एन जी देखिए, जब डेल्टा एन जी जो होगा ना, इट विल बी ग्रेटर देन, इट इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन वन, तो ऑब्वियस सी बात है केसी में आप कुछ मल्टीप्लाई कीजिएगा, केसी आप किसी चीज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और पावर है उसका, तो ऑब्वियस सी बात है केपी शुड बी ग्रेटर देन केसी, है ना। तो उस टाइम में क्या हो जाएगा, now when delta Ng is equal to zero, product has same moles of gas as reactant, तो anything to the power zero is one, तो Kp और Kc दोनों क्या हो जाएंगे इस टाइम में, बराबर हो जाएंगे। Kp is equal to Kc। now when delta Ng is less than zero, यानी कि नेगेटिव में अगर कुछ हो जाए, then in that case product has less moles of gas than reactant, and Kp की जो वैल्यू होगी that will be less than Kc। चलो, raise your hand once you're done। Waiting for Amna and Rishita। Just waiting for Amna now। ठीक है, बस एक जो थोड़ा सा ना दिक्कत होती है इन Kp is equal to Kc RT to the power delta Ng, ये जो फॉर्मूला है इसमें जो R की वैल्यू है ना, R is equal to 0.0821 लीटर ATM per Kelvin per mole when pressure is in ATM। जब प्रेशर किसमें दिया रहा है, एटीएम में, तो यू विल पुट 0.0821, ठीक है ना, 82, and R it is equal to 0.0831 liter ATM, sorry not liter ATM, my bad, liter bar per Kelvin per mole when pressure is in
बार। वैसे आपको अगर बार में दिया रहे तो आप 0.0831 यूज करेंगे। Just waiting for Rishita now. ठीक है। Now write a note. The concentration of pure solid and pure liquid is taken as unit, यानी कि 1 in equilibrium constant। ठीक है, उसका रीजन हम आपको बता देते हैं। उसको 1 क्यों लिया जाता है और मतलब होता क्या है उसके साथ। सो लेट अस सपोज वी हैव अ सॉलिड, ठीक है ना। सॉलिड तो रिएक्टेंट में है और फिर प्रोडक्ट में जाएगा तो सॉलिड ऑब्वियसली थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, इतना निकल गया। So at this time, it is having number of moles divided by volume. That is the concentration. If you see what happened to the solid, some moles of solid has been reacted. कुछ मोल react कर गए. So number of moles decreased. And if you see carefully, volume is also decreased. Now, if the numerator को भी घटा दें और denominator को भी घटा दें, you are decreasing the numerator and denominator both. तो ये जो रेशियो होगा, रेशियो कांस्टेंट हो जाएगा। मेक सेंस? यस और नो? प्लीज टेल मी। बात समझ में आ रही है? क्या ख्याल है? Yes, sir. है ना। नाउ इफ द, अब ध्यान से देखिए जरा, देखिए मान लीजिए आपके पास इस तरह से यू हैव ए विच इज सॉलिड, इट रिएक्ट्स विथ बी विच इज एक्वस, is in equilibrium with C which is solid plus D which is gas, and for this I am writing Kc. So I will write like this: concentration of C and multiplied by the concentration of D divided by the concentration of A multiplied by the concentration of B. But the concentration of C and A, these are also constant. तो कांस्टेंट को तो हम एक जगह लिख सकते हैं ना, तो बताया नहीं जाता आप लोग को। लेकिन जो हम लोग केसी लिखते हैं ना, एंड बिकॉज कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ सी इज कांस्टेंट, इट इज नॉट चेंजिंग, तो चेंज होने ही वाला नहीं है, तो सी की कंसंट्रेशन को इधर भेज देते हैं और ए की भी कंसंट्रेशन को इधर भेज देते हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट एक साथ आ गए और उसको केसी ही बोला जाता है, कुछ चेंज नहीं किया जाता इसमें। कंसंट्रेशन ऑफ डी डिवाइड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ बी। नाउ दिस इज हाउ वी एक्सप्रेस द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट व्हेन यू आर हैविंग सॉलिड। इसको 1 रख दिया, इसको भी आप 1 ले लीजिए ना, तो 1 ले लेंगे तो आपको यहाँ पे रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप लोगों को ये बताया जाता है कि 1 लिया जाता है, बट एक्चुअली 1 नहीं लिया जाता, उसको कंसिडर ही नहीं करते। इट इज कंसिडर्ड इनसाइड द कांस्टेंट इटसेल्फ, क्योंकि आप जो डिवाइड हो रहा है उसको इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। एंड कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट विल बी कांस्टेंट, कांस्टेंट डिवाइड बाय कांस्टेंट विल आल्सो बी, सी को अगर आप डिनोमिनेटर में भेजेंगे तो कांस्टेंट डिवाइड बाय कांस्टेंट विल आल्सो बी अ कांस्टेंट। ठीक है, so this is how we express if you are having pure liquid or a pure solid. Write this down. Make sense? Yes or no? Please tell me. क्या करना है, समझ में आ गया ना? हाँ जी बताएं। Yes, बस sir. सॉलिड और लिक्विड जो होगा ना, प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड, उसको कंसिडर ही मत कीजिएगा। हाँ, टेल मी एनी डाउट? आमना? No, sir. नो ना, ठीक है। Copy this down, raise your hand once you're done.
Just waiting for Rishita now. चलिए, write this question. Write the expression for equilibrium constant Kc for each of the following reactions. ठीक है, तो बस आपको क्या करना है, जहां पे सॉलिड Kc लिखना है ना, कंसंट्रेशन वाला लिखना है आपको. Should I do any one for you guys? Tell me. बताइए कौन सा करते हैं, चैट में बोलिए कौन सा करते हैं आप लोग प्लीज. Tell me guys, which one should I do? जल्दी बोलो भाई चैट में. अच्छा सवाल देख रहे होंगे अभी ना, सॉरी सॉरी. देखिए देखिए आराम से देखिए. ठीक है, थर्ड वाला करने के लिए कर रही है. थर्ड वाला. ओके ठीक है, थर्ड वाला करते हैं. यू गाइस विल स्पीक बट ना, केसी विल बी इक्वल टू, टेल मी क्या है प्रोडक्ट में. प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है ना केसी. व्हाट इज इन द प्रोडक्ट, बोलो. CH3 CH3COOH की कंसंट्रेशन. एंड व्हाट इज द स्टोइचियोमेट्री, 1, तो टू द पावर 1, कुछ नहीं चेंज करना है. मल्टीप्लाइड yeah बाय C2H5 CH C2H5OH also 1 पावर, डिवाइड बाय divided by CH3 CH3COO CO C2H5 1 raised to 1 next to 1 and then multiplied by, H2O H2O. raised to 1. no, because H2 is in liquid, will not write H2O because pure liquid हो गया ना, make sense. Yes, sir. ठीक है, aqueous मतलब प्योर लिक्विड नहीं हुआ ना. लिक्विड प्योर लिक्विड, वाटर क्या हो गया, प्योर लिक्विड हो गया. दैट इज व्हाई वी विल नॉट कंसीडर लिक्विड इन दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन. ठीक है, बाकी कीजिए. प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड को कंसीडर ही नहीं करना है. So gas and aqueous are only allowed. हाँ, गैस और एक्वस को कंसीडर करना है. नो नो, यू डोंट नीड टू राइट इट. वन मल्टीप्लाई करना क्या होता है. And the second one, since it is solved, I have to write one in the... No, no, you don't have to write anything. वन का मतलब ऐसे आप 2/1 नहीं लिखते हैं ना, Yes, अदरवाइज sir. 2 के नीचे भी हमेशा 1 रहता है ना.
So Deja, you have joined so late. So do the signs matter in this? Like the positive and negative? Positive, negative sign. Sign वो तो Not chemical, वो तो chemical species है ना, जो species को वैसे ही लिख दी है okay, sir. ना. पावर्स का ध्यान रखिएगा, जो आपके पास सोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स है ना, दैट विल बी इन द पावर्स, है ना, तो उसका ध्यान रखिएगा बस. Okay, Amna, this is my number. +917530998007. Sir, I have sent you. ठीक है. 9. First one correct. Second one correct. Very good. Third तो किया था हमने. Fifth one. अच्छा, fifth पाया क्या आपने? अच्छा. F5. Very good. Correct. Fourth में दिक्कत हुई आपको? Yes, sir. Because in product solid. हाँ, तो क्या हो गया? So you can write it like this ना. Kc will be equal to 1 upon product, मतलब यहाँ तो कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा ना न्यूमरेटर में. Divide by Fe3 positive की concentration multiplied by OH negative की concentration to the power 3. Make sense? Yes, sir. Okay, looking at your answers, Rishita, first one is correct, second one correct, fourth one correct, fifth one I f5 square I f2 to power 5. एक सेकंड, आमना आपने f2 की पावर 5 किया है? हाँ ठीक है, ठीक, वेरी गुड गाइस. चलिए, दैट्स इट फॉर टुडे.
and we will meet on Thursday now. ठीक है, we'll meet on Thursday. अभी तक का जो भी कराया हमने, आप उसको जरा रिवाइज करके रखिएगा, एंड यहाँ से फिर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे, उसके बाद वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स more of chemical equilibrium. Thank you guys. Thank you very much. Bye bye. Take care. Assalamu alaikum. Thank you. Yes, sir. Harsha, am I audible? Yes, sir. अच्छा, we did a redox reaction in the ये thing ना, ठीक है. So let us take one example, Harsha. ठीक है, and then you will understand how to do that. जैसे मान लीजिए आपके पास ये है, तो देखिए ना, that equilibrium classes तो over, आप तो बिल्कुल एंड में आए थे. I'm just taking doubts right now. तो हर्षा, इन दी ऑक्सीडेशन नंबर केस यू हैव टू आल्सो कैलकुलेट दी ऑक्सीडेशन नंबर, दोनों में आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. ठीक है, तो व्हाट इज हैपनिंग हियर, MnO4 नेगेटिव से MnO2. ठीक है, सो इसमें इस तरह से किया जाता है कि व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn, हर्षा? You need to keep your mic on. Yes, sir. MnO4 नेगेटिव में कितना है? +7. +7. वेरी गुड. और इसमें MnO2 में कितना है? +2. +2. चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? डेल्टा OS इज इक्वल टू 5. ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? Says +4. हाँ सॉरी सॉरी, +4. +4, हाँ ठीक है, सॉरी माय बैड. +4. चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया? 3. कितना? डेल्टा OS विल बी इक्वल टू +3. 3 है ना, +3 का 3. और ब्रोमीन के केस में अगर हम देखें, देन व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट? -. दिस इज -1, और यहाँ पे कितना है? प्लस हाउ मच? 5. +5. +5. 6 और 1 -5. ठीक है, सो व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट? 6 है ना? Yes, sir. 6. ठीक है, अब जिस तरह से वहां पे हम लोग ना इसको बैलेंस कर रहे होते थे, दी, अच्छा पर एटम भी है ना, एक बार ये भी देख लीजिए. ऑक्सीडेशन स्टेट इज चेंज्ड इज 3 पर एटम, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंजेस 6 पर एटम, एक Br, यहाँ पे भी एक Br. सो वी यूज टू बैलेंस द इलेक्ट्रॉन देयर. यहाँ पे सेम उसी तरह से आपको बैलेंस करना पड़ता है ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना? तो यहाँ पे इफ यू वांट टू बैलेंस द ऑक्सीडेशन स्टेट, आपको क्या करना पड़ेगा? इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. मेक सेंस? Yes, sir. सो हमारे पास अगला रिएक्शन आ जाएगा 2MnO4 नेगेटिव प्लस Br में कुछ नहीं करना, तो Br नेगेटिव एज इट इज गिव्स यू 2Mn
O2 plus BrO3 negative. Make sense till here? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. अब देखिए इसके बाद सब कुछ सीन ये आ गया ना हमारे पास MnO4 नेगेटिव Br नेगेटिव प्लस 2 MnO2 प्लस BrO3 नेगेटिव सेम चीज आया है ना। Yes, अब इसके sir. बाद आपको देखना बेसिक कंडीशन है या एसिडिक कंडीशन है देन यू हैव टू बैलेंस दी मतलब आपको चार्जेस देखने हैं वेट अ सेकंड हम आपको एनसीईआरटी में दिखाएंगे तो आई थिंक यू विल बी अंडरस्टैंडिंग इट मोर। आपके पास एनसीईआरटी है अभी सामने No, sir. नहीं है आई मीन कैन यू Because, ब्रिंग इट just 1 second, sir. या नो प्रॉब्लम। Yes, sir. ठीक है सो आप निकालिए ऑक्सीडेशन नंबर मेथड जो था ना इट इज इन पेज नंबर 274 if it is new book then I really don't know redox Yes, reaction got it. ठीक है गॉट इट तो वहां पे देर आर 1 2 3 4 5 steps ठीक Yes, sir. see the first step write the correct formula for each reactant and product identify the atoms which are, undergo change in oxidation number in the reaction by assigning oxidation number to all the elements in the reaction सबको आपने क्या करना ऑक्सीडेशन स्टेट डाल देना है ठीक है सो अभी आपका इतना कम से कम हो चुका है दैट आप यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए नहीं डालेंगे लाइक यू विल नॉट पुट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन है ना बिकॉज यू नो दैट इट इज गोइंग टू बी द सेम आप जितना प्रैक्टिस कर चुके हैं उसके हिसाब से यू नो दैट विच आर दी स्पीशीज विच आर अंडर गोइंग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अगर वो आपको कंफ्यूजन हो रहा है देन यू विल पुट इन ऑल दी यहाँ पे ऑक्सीजन का -2 है यहाँ पे भी -2 यहाँ पे -2 है तो ऑक्सीजन इज नॉट अंडर गोइंग एनी ऑक्सीडेशन रिडक्शन ठीक है तो वंस यू आर डन विद द ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपने असाइन कर दिए हैं उसके बाद देखिए जो थर्ड है कैलकुलेट द इंक्रीज और डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम फॉर द एंटायर मॉलिक्यूल और आयन in which it occurs if these are not equal then multiply by suitable number so that these become equal ठीक है वो चीज हमने कर ली उसके बाद देखिए ascertain the involvement of ions if the reaction is taking place in water add H plus or OH negative to the expression on the appropriate side so that the total ionic charges of reactant products are equal ये सेम चीज हम लोग करते हैं उसमें भी हाफ रिएक्शन मेथड आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में है ना Yes, sir. वी मेक द चार्जेस इक्वल चार्ज जब इक्वल हो जाता है चार्जेस कैसे इक्वल करना है H प्लस एसिडिक सोल्यूशन तो H प्लस आयन को यूज करके बेसिक है तो OH नेगेटिव को यूज करके और फिफ्थ केस में नंबर ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर ऐड कर देते हैं समझ में आई Yes, sir. ठीक है लेकिन इसमें ना हम क्या करते हैं आपको एक और रिएक्शन दिखाते हैं जहां पे द रिएक्शन इट इज नॉट हैविंग जिसमें आपके पास ना नंबर ऑफ एटम्स जो है ना वो सेम नहीं है इसके आगे तो कर लेंगे ना आप ये सुनो Yes, sir. ठीक है तो देखिए जैसे कि एक आपके पास ये एग्जाम्पल वी आर गोइंग फ्रॉम सी क्रोमियम यहाँ से यहाँ सो व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 3. 3 3 पर एटम है देख लीजिए है ना 3 लेकिन है पर एटम मेक सेंस है सुनो Yes, sir. ठीक So है इसको we ध्यान should रखिएगा बस multiply by 2. सॉरी सॉरी व्हाट So we should multiply by 2. वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाई 2 कहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे 2 से है ना टू मेक क्रोमियम इक्वल Yes, sir. मेक सेंस हाँ जी बताएं Yes, sir. Yes. Okay. ठीक है अच्छा अब उसके बाद ये ऑक्सीडेशन स्टेट पर एटम आपको पहले बैलेंस करना पड़ेगा चलिए ठीक है इसको आगे लेते हैं हम सल्फर चेंज हो रहा है सो व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर सल्फर 2.
डेल्टा OS इज इक्वल टू 2। अब क्या करेंगे? जी बताएं। बैलेंस द ऑक्सीजन स्टेट। हाँ, बैलेंस स्टेट। अब ध्यान से देखिए जरा, देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट जो था 3 था पर एटम के लिए, और क्योंकि यहाँ पे 2 है एंड हियर आल्सो वी आर हैविंग 2, इसको हमने बैलेंस कर दिया। दैट मींस द टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट अब यहाँ पे कितना हो चुका है? इनटू 2, दैट इज इक्वल टू 6। मेक सेंस? यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट एक सल्फर और एक सल्फर ही है ना? तो यहाँ पे चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? सिर्फ 2 का है। सो विल मल्टीप्लाई हियर दिस होल थिंग बाय व्हाट? विल मल्टीप्लाई दिस होल थिंग बाय 3। 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे? दिस विल बी, चलिए हम लिख देते हैं इसको, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस SO3 में आ जाएगा 3SO3 2 नेगेटिव gives you 2Cr3 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव में आ जाएगा 3SO4 2 नेगेटिव। ठीक है। अब इसके बाद आपके पास जो करना है दैट इज गोइंग टू बी द सेम थिंग। अब देखिए हम क्या कहते हैं ना कि इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करने के लिए इसको यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है, आप ऐसे रफ पेज में क्या कीजिए, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 6 से प्लस 3 जा रहा है, दैट मीन्स इट इज गोइंग टू ईट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? ये पहले जा रहा है ऐसे, इट इज गोइंग टू गिव यू Cr3 पॉजिटिव। पहले बैलेंस कर लीजिए क्रोमियम एटम्स, तो 2 क्रोमियम लिख दिया आपने। ईच क्रोमियम एटम विल ईट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स ये खाएगा। इट इज ईटिंग 6 इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा आपके पास क्या हो रहा है? SO3 2 नेगेटिव से SO4 2 negative. Now here the change in oxidation state is +4 से +6, that means it is losing 2 electrons. अब इसके बाद आपने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसको नहीं मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको नहीं करना पड़ेगा। 6 है, यहाँ पे 2 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, so it is becoming 3 and 6। अब इस रिएक्शन को एज इट इज लिख दीजिए, ठीक है। Cr2O7 2 नेगेटिव, 6 इलेक्ट्रॉन इज कैंसिल्ड, प्लस 3SO3 2 negative gives 2Cr3 positive plus 3SO4 2 negative। ठीक है, बस ये आप दिखाइए मत, डोंट शो दिस। ठीक है, मेक सेंस? यस सर। आप जो अपने ये ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दिया, डेल्टा वाइज ऐसे करके दिखा दीजिए, इसको रफ में कर लीजिए। आई थिंक दिस इज मोर क्लियर। थोड़ा सा यहाँ क्लैरिटी ज्यादा होती है जब हम हाफ हाफ रिएक्शंस को ऐड करते हैं। दैट इज वाई आई ऑलवेज प्रेफर कि बच्चे इसी को यूज करें, बिकॉज ये चीज जो है ना आपका, ये आपके 12th स्टैंडर्ड में इस्तेमाल होने वाला है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में। ठीक है, इसका थोड़ा सा आप पार्ट देखें तो रिडॉक्स रिएक्शन में थोड़ा सा कहीं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आखिरी के पार्ट्स में है, व्हेन यू हैव सेल्स एंड ऑल।